Let us now discuss the difference between functional structure and divisional structure. As we have already studied of both of the topics, it will be easy for us to discuss the difference, to discuss the comparison between both of the structures. First is formation. In functional structure, it is based on functions, we know that. In divisional structure, it is based on product lines, because different more than one product or more product line. In case of more product line, divisional structure is suitable. Second is responsibility. It is difficult to fix on a department. In case of functional structure, it is easy to fix responsibility for performance. In case of divisional structure. Third, specialization. In case of functional structure, there is functional specialization. As we've studied, on the basis of different functions, different departments are created. For example, sales department, finance department, etc. In divisional structure, product specialization is there. We know because different lines of products are there. The fourth basis is managerial development. In case of functional structure, it is difficult as each functional manager has to report to the top management, right? And in case of divisional structure, it is easier. Autonomy as well as the chance to perform multiple functions helps in managerial development. Fifth is cost. कॉस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर में इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि फंक्शंस जो है वो डुप्लीकेट नहीं होते, बिकॉज देर आर सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट काइंड ऑफ फंक्शंस. In case of divisional structure, it is costly as there can be duplication of resources in various departments, right? Then comes sixth basis, that is coordination. It is difficult for a multi-product company in case of functional structure. Obviously, we know it because in case of multi-product company, which structure would be better and where the coordination would be better? In divisional structure, है ना? Then in case of divisional structure, it is easy because all functions related to a particular product are integrated in one. अगर मैं बोल रही हूँ divisional structure, वहाँ पर there are different products that are produced or manufactured, and on that basis different divisions have been created for different products, and in that particular division, in one division we have different functions that has been performed. So यहाँ पर जो है coordination वो easy हो जाता है. Suitability is the last basis. It is more suitable when the size of the organization is large, has diverse activities and operations require high degree of specialization. कहाँ suitable है functional structure? जहाँ पर organization large in size है, right? और वहाँ पर activities जो भी हैं वो सारी diversified है. In divisional structure, it is suitable for those business enterprise where a large variety of products are manufactured. This we know, right? जहाँ पर ऐसी organizations हो who are into the business of making different kind of products, right? That organization will adapt divisional structure. Are we clear? Let's come to the next difference. Formal organization and informal organization. The first is meaning. So formal organization का meaning है the structure of authority relationships created deliberately by the management to achieve its objectives. The formal organization जो है we have discussed it, so I won't explain it in depth again. I'll just say जो इस point में लिखा है कि obviously formal organization क्या होता है, जहाँ पर सारे काम जो भी परफॉर्म या एक्टिविटीज़ करनी है हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, वो हम डेलिबरेटली देखते हैं. वो प्रोसेस, वो अथॉरिटी रिलेशनशिप, जॉब्स वगैरह हम डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं. In case of informal organization, network of social relationships arising out of the interaction among employees within an organization. अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ, वहाँ मेरी अपने कोलीग्स से बात होती है या मैं साथ में खाना वाना खाती हूँ, एंड ऑन दैट बेसिस मेरा कोई इनसे इनफॉर्मल डायलॉग्स होते हैं, तो दैट कम्स अंडर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओरिजिन, नेक्स्ट बेसिस इज ओरिजिन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज़. कहाँ से निकलता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? पॉलिसीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स से. एंड informal organization is a result of social interaction, as I've discussed already. Third basis is authority. Arises by position one holds in the organization.
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसके पास कितनी अथॉरिटी है डिपेंड्स अपॉन कि कौन से पोजीशन पे आप हो, कौन सी रैंक है आपकी. एंड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट अथॉरिटी अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़, कि किसकी क्वालिटीज़ कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है. देन कम्स बिहेवियर. In formal organization, behavior is directed by rules of the organization because we know it very clearly. It is created deliberately. And in formal organization, no set behavior pattern for members. Obviously, अगर मैं ऑफिस में कभी काम के अलावा in break, lunch break, I go to my colleagues and I talk with them. Obviously, मेरे पास कोई रूल नहीं है कि मुझे ऐसे बात करनी वैसे बात करनी. वो एक social interaction होती है. Flow of communication, the next basis. In formal organization, scalar chain is followed, right? And in informal organization, any direction. There is no set pattern. Sixth basis is nature. Informal organization, rigid. Nature कैसा होता है? Rigid. How? We know it, right? It is rigid because there are certain rules and policies. And in case of informal organization, it is little flexible because we don't need to follow any rules, guidances or policies of the organization to have personal interaction with the other employees. Then the sixth basis is nature. No, the seventh basis is leadership. So leadership में formal organization if I talk about, वहाँ पर managers are leaders. And informal organization में कौन leaders होते हैं? वो कोई भी ग्रुप डिसाइड कर सकता है अपने आप में, राइट? वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजर होगा वही लीडर होगा. एनी वन कैन बी मैनेजर बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ द ग्रुप, राइट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. जो भी हम अभी डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ उनके बेसिस के थ्रू ध्यान रखना कि क्या किसका डिफरेंस है, क्या किस में क्या लिखना है, क्या समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो केस स्टडीज़ आएंगी वो कुछ भी एग्जाम्पल आपको दिया जा सकता है एंड दे में आस्क यू दैट राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. दे कैन आस्क ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी. सो डिफरेंसेस बहुत अच्छे से क्लियरली समझना और याद करना. So let's come to the delegation of authority and decentralization. पहला बेसिस दिया है nature. So delegation of authority जो है it is a compulsory act. Why? क्योंकि एक इंसान one individual cannot perform all the task on his own, है ना? एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता अपने आप से. He needs employees or manpower to handle different activities. In decentralization, it is an optional policy and तभी implement होती है जब top management discrete करती है, right? Next basis is freedom of action. In delegation of authority, subordinate के पास जो है कम फ्रीडम होता है अपने डिसीजन लेने का, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल किसके पास होता है? मैनेजर्स के पास, दैट मीन्स सुपीरियर्स के पास. एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स को ऊपर थोड़ी कंट्रोल जो होती है वो कम होता है टॉप मैनेजमेंट का, तो दे हैव अ ग्रेटर फ्रीडम. हु सबऑर्डिनेट्स हैव अ ग्रेटर फ्रीडम. देन कम्स स्टेटस. इट इज़ in Delhi, if we talk about delegation of authority, it is a process followed to share task. Obviously अगर मैं किसी को authority दे रही हूँ, हमने पढ़ चुके हम ये, और responsibility कोई दे रही हूँ उसी के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है जो मैं अकेले नहीं संभाल सकती. And in case of decentralization, it is the result of the policy decision of the top management. Clear? Then comes the next scope, next basis, that is scope. In delegation of authority, it has narrow scope. Why? क्योंकि वो superior और जो भी उसका immediate subordinate है वहाँ तक ही limited है. और decentralization है वो wide scope है. क्यों? क्योंकि जो delegation हो रहा है वो किसी भी level तक, lowest level तक भी हो सकता है management के.
पर्पस क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का? मैनेजर का बर्डन कम करना, लेसन द बर्डन ऑफ मैनेजर. एंड डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. द लास्ट बेसिस इज विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी. ईजी होता है इन केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, द सुपीरियर एंड इट्स इमीडिएट सबॉर्डिनेट. और इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पर जो है अथॉरिटी विड्रॉल इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो भी डेलीगेट हो रही है अथॉरिटी वो एक्सटेंड होती है टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सिर्फ इमीडिएट सबॉर्डिनेट नहीं होगा, उसके बाद वाला सबॉर्डिनेट, उसके बाद वाला सबॉर्डिनेट, दैट मीन्स टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ तक डेलीगेशन होती है. सो आर वी क्लियर विद द डिफरेंस? So the first case study is Shah Industries is a company dealing in cycle manufacturing. This company started earning huge profits. Another competing company asked its production manager to investigate the reasons of earning huge profits by Shah Industries. The manager found that both the companies have similar kind of activities, except the communication that took place in Shah Industries was not through scalar chain but in all directions, while in competing company the communication happened through scalar chain. So the question asks, first identify the type of organization which permits the flow of communication in all directions in Shah Industries. As we can see in the answer, it is known as informal organization. Why? Because we know, we've studied that in informal organization the flow of communication is in all direction. There is no set pattern, there is no scalar chain, right? And the next question asks, also state an advantage of the type of organization identified in part A. तो ये चीज़ I won't be explaining you, I've already discussed in the previous video. So go through the video and you can write it, any other advantage also which I have written. Other than that also you can write, okay. I have written fulfill social needs. And whatever you will write in the question A and B, you need to explain it in 1 or 2 lines, right? Let's come to the next case study. Sunil runs cyber security company named CSS Limited. One day he got a big project from government. The volume of work made him feel little burdened, as it was impractical for him to handle all the work by himself. He expanded the team and granted some authority to the team members to fulfill their responsibilities. Sunil was now able to focus more on pivotal tasks and objectives, and in turn, team members got opportunities to develop. So the question asks, A, identify and explain the concept used here, and B, state any 4 importance of the concept. तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है किस कंसेप्ट के बारे में बात हुई जा रही है. As we can see in the answer A, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है. कैसे? वी कैन सी हेयर कि जो एक काम एक इंसान के पास था, सुनील के पास बहुत सारा काम था, बट he cannot take all the burden of the work. He need to do some pivotal task also, so that जो भी और other activities हैं वो कोई और परफॉर्म कर ले. तो उसके लिए उसने टीम हायर करी, एंड उस टीम ने क्या करा, वो जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ दी गई वो उन्होंने परफॉर्म करी, एंड उसकी वजह से सुनील जो है ही वॉज एबल टू व्हाट, ही वॉज एबल टू फोकस मोर ऑन हिज इम्पॉर्टेंट टास्क. एंड ये किस में आता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में. हाउ? बिकॉज सुनील डेलीगेटेड द अथॉरिटी to the team members. Why? Because the team members were given some responsibility of performing certain tasks, right? Then अब हमें 4 importance बतानी है, तो ये आप खुद लिखेंगे. Go back to the video of where I've discussed delegation of authority, and you can write any 4 importance of that concept and do explain it in 1 or 2 lines.
सो दिस वॉज अबाउट दी केस स्टडी एंड डिफरेंसेस. क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं. यू नीड टू गो थ्रू, एज आई सेड, द कंसेप्ट इन डेप्थ एंड द डिफरेंसेस बेसिकली. वो अगर क्लियर हो जाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको बहुत ही ईजिली कर पाएंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. Do like, share and subscribe to my channel and keep watching my videos. Thank you so much.